Very good morning, everyone. We will begin in the next 2 minutes. We are just waiting for the coach to log in. Good morning, everyone. Good morning, Anuppam. Are you there? Good morning. Yes, I'm here. Oh, so good morning. I'm Sakshi Rohra, organizer of PosiFest 2024. Today we have Anuppam Shakti, who's going to discuss with us about communication mastery. And she's a dedicated psychotherapist, a sound healer, graphologist, and Reiki Grandmaster, actively promoting mental, emotional, and spiritual health awareness in schools and institutions. She has numerous success stories of helping individuals find relief from pain and insomnia to the transformative power of sound healing and essential oils. A very warm welcome to you, Anupam. We can't hear you, Anupam. Hmm. Just give us a minute. Yes, so yesterday, who all did the glad reflections? Did anyone uh, write it down, jot it down in their diaries, or is there something that they would like to share after yesterday's experience? Sakshi, mine yesterday was quite peaceful. The entire day went quite peaceful, and the routine day wherein there is so much hassle. We have to deal with so many people. Like ideally, there are certain incidents wherein generally I get so pissed off. So yesterday there was no such incident Yeah. entire day. So you were not reacting, you were responding to situations. Yes, Thank you. actually. Thank you for sharing. Yes, Anupam, are you there? We can't hear you, Anupam. I may like to mention Yes, sir. the great coincidence Hmm. that yesterday was 10th of October, and it is internationally known as World Mental Health Day. Yes. So, what I'm trying to express is that the by sort of a thought of universe, that there is a connection, and we have, yeah, yesterday you had started on a very, very important day, the World Mental Health Day, and everything starts from the spiritual level, because if we are stable in the mind, in the next stage, the if we are stable, we are in a position to control our emotions.
That means the negative emotions are at bay and we have only positive emotions. Yes. That is the emotional level. This makes the mind strong, the mental health. And when your mind is strong, you are physically more active and you get more energy. So this is the sort of a equation between spiritual, emotional, mental, and physical in this sequence. So a very right beginning was done, and as we thought yesterday, that this has to become a habit, a practice every day. This is what I wanted to share. Thank you very much. Thank you. So till we have Anupam coming in, there's some problem from her side to log in. Let's have some understanding on the topic of forgiveness. How does one relate to this topic? Because this is one thing that we all really struggle. We hold on to so many things in our life. Somebody said something to us, somebody has done wrong to us, maybe we've done wrong to someone. So what does forgiveness hold in your life? Would anyone like to share? What I have understood is that there is a very important thing which is called as self-healing. Self-healing is very, very important. If we are always sort of if we are, somebody has done sort of a something which is not good, not fair towards us. So I mean to say, unless and until we forgive that individual, healing of both the persons will not take. So Good when morning. there is a healing, this is a trauma. This is, you can say, a very, very depends upon the extent of damage done, emotional damage done. But if someone gets a courage, a power to forgive someone, then there is a healing of the mind. Definitely. So, Thank you so I think this is the sort of a important. And yes, we will come back to the topic of forgiveness, and I will continue from where you are speaking. But we have Anuppam Shakti here right now with us. A very good morning, Anupam. Good morning, sir. Yes, stage is all yours. Yeah, thank you so much, Sakshi. And again, give a warm welcome to everyone who is waiting in the morning today. So I hope these are great people who have got the habit of early rising, and they are here to really explore the possibilities. So जब हम यहाँ बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, it's not only about knowledge sharing. It's about our journey that we have come through and how we have learned the things. So topic of mine, Ji Sanjay ji, good morning. So topic of today is mindful communication. So as I am a psychotherapist as well as in the healing modality, whenever we talk about communication, it starts with the basic thing. Words are powerful. They are so powerful that can make relationship, that can give you what you really deserve in your life, or it can even snatch whatever. Are you able to listen to disturbances or? There is a slight disturbance. Okay, then I will just move from here. I will be at some other place. Because I have this noise cancellation mic, I thought that it won't be audible. Okay, I hope this point will be better. So we were talking about words are power. Words have all the energy that we are giving to it. But words के पीछे जब हम communication की बात करते हैं, there also comes the non-verbal communication. Non-verbal means
द काइंड ऑफ फेस, जैसे अभी जो कम्युनिकेशन मैंने किया, आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक विथ यू, आई वॉज ट्राइंग टू ऑफर समथिंग दैट आई हैव, बट साथ साथ जो मेरे बैकग्राउंड में आ रहा है, इफ आई वुड हैव स्टेड ओवर देयर नॉट लिसनिंग टू द पीपल ओवर हियर, सो दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मैं आपके प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रही हूँ एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज नॉट हेल्पिंग यू इन गुड वे, आई शुड से, मतलब उसका कोई पॉजिटिव अच्छा सा इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बेसिक से बेसिक चीज की अगर हम बात करें, तो हाउ वी आर प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ। अभी मैं आपके सामने आई, कम्युनिकेशन में पहला जो जरूरी चीज होता है, आर यू रियली प्रेजेंट राइट नाउ। जैसे आप में से कई लोग कैमरा ऑफ किए हैं, ठीक है, हम लोग 4 लोग हैं जो कैमरे पे हैं, सो देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। यू आर कंप्लीटली ओवर हियर, 100% ओवर हियर, यू आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर, दैट्स व्हाई आप श्योर है कि चलेगा, मतलब जो भी हो रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग। तो बार बार जब भी हम ऑनलाइन सेशंस वगैरह में होते हैं तो कैमरा ऑन करने के लिए कहते हैं, जस्ट बिकॉज वी वांट योर 100% प्रेजेंस इवन इन द वर्चुअल बैकग्राउंड। तो ये पहला हुआ, प्रेजेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंस किस टाइम पे आ रहा है, व्हेन आर वी प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ, व्हाट इज द मोमेंट, हम कितना डिलेट कर रहे हैं, कितना ज्यादा टाइम ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको 6 बजे बुलाया एंड आई एम कमिंग हियर बाय आफ्टर 10 minutes और समथिंग, एंड देन आई एम टेकिंग योर मोर टाइम फर्दर, मतलब उसको खींचते हुए, क्योंकि मुझे तो अपना काम पूरा करना है, सो आई एम टेकिंग इट टिल 10 minutes later। सो व्हाट इज हैपनिंग, उस 10-10 मिनट के चक्कर में आपका 20 मिनट चला गया। So these are the basic things we need to consider when we are really starting any sort of conversation in any backdrop, चाहे वो स्कूल का है, आपके बिजनेस का है, या फिर आपके घर के किसी रिश्तेदार का है। सो ये प्रेजेंटेशन का फर्स्ट थिंग हुआ कि व्हाट टाइम वी आर कंसिडरिंग, एंड नाउ एज वी आर प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ, अब वर्बल तो हमें मालूम है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगी। बिफोर दैट आई रियली वांट टू कंसंट्रेट ऑन नॉन वर्बल, क्योंकि आप लोगों को अगर मालूम हो, 80% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, 20% वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जिस वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, द वर्ड विच हैज रियली गॉट द पावर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी 20% ही है, बाकी 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉन वर्बल। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, फॉर श्योर देर आर सम ऑब्लिगेशंस इन दी वर्चुअल बैकग्राउंड, आपको मैं पूरी तरीके से दिखाई नहीं दूंगी, मेरा हैंड मूवमेंट नजर नहीं आएगा, मैं कैसे खड़ी हूँ नजर नहीं आएगा, बट व्हेन यू आर फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, आई मूवमेंट प्रॉपर नजर आती है आपकी, आपके हैंड मूवमेंट प्रॉपर नजर आते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ और कहीं और मेरी नजर है एंड आई एम टॉकिंग टू, लुक इवन इन दिस वर्चुअल बैकग्राउंड व्हेन आई एम लुकिंग एट समथिंग एल्स, ध्यान यहाँ से वहां शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही ध्यान यहाँ से वहां शिफ्ट हुआ, तो वो एक डिविजन आ गया, एक ड्रिफ्ट पैदा हो गया, तो कन्वर्सेशन प्रॉपर होगा ही नहीं, 100% जो हमारा इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशन है वो तो हो ही नहीं पाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर वी आर इंटरेक्टिंग विथ एनी वन, वी शुड बी कंप्लीटली प्रेजेंट। आंखें हमेशा सामने वाले से जुड़ी होनी चाहिए। फॉर श्योर वी कैंट कीप ऑन स्टेयरिंग, वो भी एक प्रॉब्लम है। व्हेन यू आर continuously staring at someone, that becomes a kind of daring, that becomes a kind of like making the other person conscious. So shifting the eyes naturally, coming back to the person whom you are listening to, whom you are interacting with. अब आंखों के बाद बातें आती हैं आपके कानों की। कहा जाता है कि कहना हम सबको बहुत कुछ होता है, हम सब ने जो भी अनुभव किया, जैसे मैं अभी आपसे बातें किए जा रही हूँ, बट एट वन पॉइंट इट बिकम्स सो मोनोटोनस दैट यू रियली आर लाइक, मतलब कितना एक ही को सुनते जाना है, इवन आई हैव सो मच टू शेयर। और उस चक्कर में हम क्या होता है ना कि हम बोलते रह जाते हैं, एंड वी रियली वांट टू कट इट ऑफ, वी वांट टू शेयर आवर पॉइंट। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में बेसिक रोल नॉन वर्बल को हुआ, और उससे भी ज्यादा रोल होता है लिसनिंग का। सो इवन व्हेन यू आर सिटिंग ओवर हियर, हाउ यू आर लिसनिंग, दैट मेक्स द कम्युनिकेशन मोर इम्पैक्टफुल। तो अभी मैं कम्युनिकेशन के बारे में जो कुछ भी बात करना चाहूंगी आगे, उसके लिए आई वुड रियली अप्रिसिएट योर इनपुट्स, योर शेयरिंग, सो दैट आई कैन शेयर फर्दर। मैं कम्युनिकेशन के फील्ड में पिछले 20 साल से रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग ऑल द टीनेजर्स एंड यूथ English communication for the last 20 years. For last 8 years, I have been more into healing modalities, helping my youth. क्योंकि मेरे जर्नी में ऐसा हुआ था, अगर मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताऊं, कि
I was dealing with the students to let them learn the communication. अभी मैंने आपको क्या बताया, कम्युनिकेशन में 20% ही वर्ड्स हैं, बाकी 80% नॉन वर्बल हैं. अब जो ये नॉन वर्बल हैं, इन पे कमांड करना, यू आर मच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड टू लिसन टू माय पॉइंट. बट जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए ये स्टेज अलग होता है. दे अडेप्ट मोर फ्रॉम व्हाट दे आर ऑब्जर्विंग. वो बातें सुन के नहीं समझते हैं. उनको जितना हम अपना दिखला रहे हैं, वॉट एवर दे आर ऑब्जर्विंग, वो वैसा ही करते हैं. इसके लिए आपको अगर एक एग्जाम्पल मालूम है कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, चलिए आपसे ही हम शुरू करते हैं. मोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट लिसनर. मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ. क्या आप मुझे बताएंगे कि क्यों कोई भी झूठ बोलता है, बच्चे ही नहीं, कोई भी झूठ क्यों बोलता है? गुड मॉर्निंग मैम. आइडियली झूठ लोग इसलिए बोलते हैं, either they want to don't want to represent what they are, or they think that the other person is not going to understand what I want to express myself. This is my basic understanding. Thank you so much. That's really wonderful. That's a great point. Umesh ji, will you please share why do you think anyone lies? I'm not Yes, asking a person, anyone. देखिए, आई हैव गॉट यू कैन से ट्रिपल रोल्स. मैं अपना बैकग्राउंड बता रहा हूँ. आई एम अ पीडियाट्रिशियन, तो बच्चों का वैसे ही डॉक्टर हो गया सिंस मोर देन 40 years. जी जी. उसके बाद में आई एम अ पेरेंट. हम्म. उसके बाद में आई एम अ ग्रैंड पेरेंट. हम्म. सबसे पहले आई एग्री 500% that non-verbal communication is very, very important. जी जी. And पेरेंट्स का बिहेवियर, पेरेंट्स कैसे घर में आपस में बिहेव करते हैं, बच्चे उसको इम्बाइब करते हैं, जी बच्चे उसको देखते हैं, और उसके अनुसार उनकी पर्सनैलिटी सॉर्ट ऑफ ए डेवलप होती है. राइट. सो एंड दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंसान दूसरे को देखता है तो दूसरे को स्माइलिंग चाहता है. नहीं यार उमेश जी, आपने मेरा सवाल शायद सुना नहीं. मैंने आपसे पूछा कोई भी बच्चा झूठ क्यों बोलता है? झूठ जो है वो झूठ जो है वो एक उसका एक यू कैन से सेल्फ डिफेंस है, विच आई विल ट्राई टू मेंशन, कि वो किसी चीज को यदि वो सही तरीके से उसको वो मतलब जो है कि उसका वो सेल्फ डिफेंस है. मतलब वो क्वेश्चन को सही तरीके से यदि वो हैंडल नहीं कर पा रहा तो वो एक शॉर्टकट निकालेगा, और यदि वो इंटरनली स्ट्रांग है तो झूठ नहीं बोलेगा. जी जी. बट अदरवाइज वो एक सेल्फ डिफेंस है, शॉर्टकट टाइप का है कि मैं किसी भी तरीके से बच के निकल जाऊं. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, हो सकता है मैं भी रॉन्ग. No, thank you so much. You are right. And both of you, what you have said is completely right. आशा जी, आप भी शेयर करना चाहेंगे कुछ? Anything else apart from that? मतलब, do you agree with both of them or you want to add something? एक्चुअली मैम कुछ थिंग्स ऐसे होती है, मतलब समझो माय यंगर गर्ल, उसकी कुछ ऐसे पर्सनल थिंग्स होती है जो शेयर नहीं करना चाहती है, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहती है, तो शी विल लेट गो. ओके ममा, इट्स फाइन, यू नो, एक सेंटेंस में वो उसको स्टॉप कर देती है. चलो ठीक है ममा, छोड़ो ना. आप ओके. फिर दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं. आशा जी, यू आर टॉकिंग अबाउट सीक्रेट्स. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस. सबके पास सीक्रेट होना चाहिए एंड दे मस्ट डिसाइड किसको बोलना है, नहीं. बट किसी एक स्टेटमेंट को घुमा के बोलना, गलत तरीके से बोलना, वही तो झूठ है ना. जो उसकी सच्चाई, जो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप को बदल देना, तो वो झूठ हो गया. अच्छा, तो ये एक्सक्यूज देना. जी, समथिंग एक्सक्यूज देना, एक्सक्यूज झूठ भी. बोल देना. हाँ, झूठ बोलना. झूठ बोलना कि ये ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, ये मैंने नहीं, उसने किया था, ये मैंने देखा ही नहीं. सो दीज आर द एज लाइज. पर सिचुएशन. हाँ, एज पर सिचुएशन कुछ चेंजेस होते रहते हैं, बट वी कांट से प्रॉपर, मतलब वो बोल नहीं पाते हैं प्रॉपरली कि चलो ऐसा सिचुएशन था, उसने झूठ बोला. तो अभी मैं आप लोगों को क्यों कह रही थी कहने के लिए, बिकॉज यू शुड शेयर कि क्यों लोग झूठ बोलते हैं. अभी Can I साक्षी, say something? अरे आई नो दैट, आई जस्ट वांट देम टू कम अप विद दिस. Yeah. Could tell कि generally जो भी झूठ बोलते हैं, you Okay, can. Sanjay is saying something. Sanjay wants to say something. Okay. Good morning, everyone.
In my perspective, there are basically two reasons why people talk lie. First, very natural, that they want to hide the reality, and in second is some emotional touch is there, like they are afraid of that the person will get hurt if he or she comes to know what the real situation, or they are in fear that how will they react if they came to know about the real. So they, to hide that reality, they talk like. Thank you so much, Sanjay ji. Yes. आप भी कह दो साक्षी फिर. It's okay, you continue. It's okay. So because I just wanted them to come on the same page. लोग Yes. झूठ ये बोलते हैं because they have the fear of bringing it out. वो fear can be the reason that how the person will react, how the things will happen, maybe I'll get some punishment. तो ये सारी चीजें जब दिमाग में चल रही होती हैं तो कोई भी झूठ बोलता है कि चलो इतना कांड से बचना है तो एक थोड़ा सा झूठ बोल दो. ओके, आई जस्ट वांटेड टू कम ऑन द सेम पेज व्हाई वी आर लाइंग. अब ये चीज क्यों आती है, व्हाई दिस फियर डेवलप. जैसे अभी ये उमेश जी ने बहुत अच्छा बताया कि जब वो स्ट्रांग इनफ होता है कि उसको डर नहीं होता है, देन ही डजंट लाई. मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है, मुझे ऐसा किया मैंने, अब बताओ आपको क्या करना है करना. सो दिस कम्स आउट व्हेन यू हैव दैट सच स्ट्रांग विल पावर एंड यू शेयर. तो ये विल पावर झूठ बोलने का कैसे डेवलप होता है, फॉर दैट विल जस्ट हैव अ स्मॉल स्टोरी that you all might have witnessed at your home or nearby. कि मान लीजिए आपके घर में एक गेस्ट आते हैं और उस गेस्ट से आप नहीं मिलना चाहते, एंड यू विल आस्क योर चाइल्ड, उसको बोल दो पापा घर पे नहीं है, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू मीट, यू आर बिजी समवेयर, जो भी रीजन है. बट rather than telling कि I am busy or I am occupied somewhere, you just ask your child to tell it to the guest कि पापा घर पे नहीं. नाउ दिस चाइल्ड हैज गॉट अ मैसेज. इससे तो कोई डर भी नहीं था, वो घर में आ भी जाता तो क्या ही दिक्कत हो जाती, कुछ भी ऐसा तंगी होने वाला नहीं था उससे. बट यू जस्ट डिनाइड दैट पर्सन टू गेट इन टेलिंग अ लाई. अब बच्चे को क्या लगा, ये घर में सब लोग ऐसा करके बोल रहे हैं, सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल. ये तो राइट, यही यही एक ट्रेडिशन है, यही रूटीन है. तो आप कितना भी बोलो कि झूठ बोले कौआ काटे, झूठ बोले तो काली मैया सजा देंगी, झूठ बोले तो ये होगा, दे वोंट अंडरस्टैंड. आपको तो काली मैया ने सजा नहीं दी, आपको तो कौआ ने नहीं काटा. So this is how the child or anyone imbibes a characteristic. It's not just by words, but how we are presenting. So again, coming back to our non-verbal communication, हमने उसको कितना भी बोल दिया कि झूठ बोलोगे तो तुम्हें कर्मों की सजा मिलेगी, झूठ बोलोगे तो भगवान सजा देंगे. कहाँ मिला आपको, मैं तो नहीं देख रहा. So, because the child is looking at the instant result, the child doesn't see the long run, how it happens, है ना. हेलो बच्चा, अभी बाद में मिलते हैं. Okay, so we were talking about first the way we are portraying ourselves in front of the people, specifically those people who are influenced by us. तो आप लोग सब, जैसे उन्होंने बताया, पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं, और आप साक्षी भी माइंडफुलनेस मतलब एक्टिविटीज में रहती हैं. मोहित जी, आपको तो मैंने सुना नहीं है, बट यू माइट बी, ऑल ऑफ यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन और business or whatever where you are influencing many people around you. तो जब आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फर्स्ट, जो हम एक आइडियल अगर ले इन्फ्लुएंस करने का सबसे ज्यादा होता है, दैट इज अ टीचर, स्कूल का टीचर, कॉलेज का प्रोफेसर. अब उसकी आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए, आप बताओ. मैं उनसे पूछूंगी जिन्होंने अभी तक नहीं कहा है. वैभवी जी, आप शेयर करोगे किसी एक टीचर की आइडेंटिटी. मैं सिर्फ उनके प्रेजेंटेशन की बात करी, उनको कैसा दिखना चाहिए, उनको कैसे खड़े होना चाहिए, उसकी बात कर. वैभवी जी. हाँ, उन्हें बेसिकली अप्रोचेबल होना चाहिए. एक मिनट वैभवी जी, मैं आपको करेक्ट करूंगी क्योंकि वी विल गो टू द पॉइंट ऑल द टाइम. तो यहाँ मेरा पूछना है, एक टीचर को कैसे खड़े होना चाहिए, हाउ द टीचर शुड स्टैंड. टीचर का एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत सारे इन्फ्लुएंस करता है यंग एज में. सो हाउ अ टीचर शुड स्टैंड, मतलब उसको खड़े कैसे होना चाहिए, किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना चाहिए सामने. स्माइलिंग फेस. थैंक यू सो मच. यस, जो कि उमेश जी ने भी बोला था. Yeah, then
the understanding basically mutually understanding या properly approachable in the sense कि जाके हम बात कर सकते हैं जी जी ऐसे थोड़ा फ्रीनेस हो अगर स्ट्रिक्ट हो गए तो बात नहीं कर सकते हैं जी जी ऐसे कैसे पता चलेगा कि टीचर स्ट्रिक्ट है टीचर कुछ बोल नहीं रहा है टीचर इज जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर हाउ विल यू अंडरस्टैंड द टीचर इज स्ट्रिक्ट और पोलाइट और हम्बल फेशियल एक्सप्रेशन व्हाट डू यू मीन बाय फेशियल आपने एक स्माइल तो बताया स्माइल के अलावा और कैसी होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज what is that body language I'm just coming to you I'm just making you come to that point body language मतलब क्या बॉडी तो पूरा बॉडी है ना सर से लेकर जेस्चर आप उसी के सिनोनिम्स बताते जा रहे हो मैं आपको कर like I am standing over here right now okay and I am standing like this stooping so बच्चे लोग कैसे हो how are you doing today what kind of energy I am sending in the class even if I am not saying anything not uttering a single word I'm just stooping it might be a physical pain it might be anything but if I am stooping what will be the impact what will be the influence the whole audience will be feeling that kind of weakness मैंने कुछ भी नहीं बोला आते के साथ मैं चल रही हूँ and I'm walking as if I have been hit by some arrow and I'm walking like that what will be the impact then when I stand in front of you and stand sternly पूरे body language मेरा straight है and then I'm standing hello everyone look at the difference when I'm stooping and when I'm standing stern so ये कुछ चीजें हैं जो influence करती है घर में भी अगर माएँ हैं those who are always busy doing some sort of thing and they're always अरे रुक जा बता तू अरे रुक जा so you are always telling that this is the habit you are sending it to your child also that's the reason the child gets this habit of telling all the time मैं तो बहुत busy हूँ जरूर so all the time this sort of hypertension this sort of excitement which is somehow not taking them anywhere isn't it so I was coming to this point after this what body language you are talking about is whether you are standing firm or bent whether you have stiffness in your body anywhere or you have left it loose तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है दैट यू हैव टू लूजन योर बॉडी व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विथ एनीवन जितना ज्यादा आप स्टॉप मतलब स्टिफ बन करके बात करोगे उतना ज्यादा कम्युनिकेशन में अलूफनेस आएगा दूरी पैदा होगी ड्रिफ्ट आएगा isn't it do you agree with me okay so we are moving to the kind of non-verbal communication we really do sometimes unknowingly मैं आपसे बात कर रही हूँ करते करते wait I'll show you Sakshi I would request you to share how you are feeling right now So I'm feeling energetic. I'm feeling quite good. I'm feeling connected with what you're speaking. I'm feeling connected with what people are sharing. And I can relate to things. Thank you so much, Sakshi, for sharing. I was just trying to show them one experiment. I hope people have observed. आप लोग सबको मैं नजर आ रही हूँ ना because I'm trying to make some faces and some gestures. So when I was talking, I was making this kind of movement. If you know about smirk, if you know about snarling, so all these kind of movement which I'm making with my lips while she is talking, what does it do? It puts me down to talk. Sorry? It puts me down. I would not want to continue further, or I would not, I would feel you're not interested in listening to me. So why should I continue? Yes, very true. It will stop the communication then and there. मैं क्यों share करूँ जब तुम interested ही नहीं हो? So this shows disinterest. I'm talking to you. I have asked such an intricate question. How are you feeling? Which people come like brings out from their heart. So with the heart, someone is sharing, and I'm snarling, smirking, and making such sort of faces. How that person will really share anything to me further? किस तरीके का communication बनेगा? कैसी relationship बनेगी? So these were the few basic things which I wanted to highlight before getting into proper communication. Umesh ji, do you want to share something? Yes, I was just trying to mention that there are two components. One is the component of academics, which is in schools and colleges, institutes. And the second bigger component, what I feel, is the component of the family. Right. So communication in the family is a foundation, and
parenting is very, very important. Very That means whatever we are discussing, each parent should become a very good role model. And so that will make a very big foundation. And you gave a very good example. आपने बहुत अच्छा example दिया था कि जैसे parent ने कहा कि बोल दो कि हम घर में नहीं हैं. तो कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें पेरेंट्स को भी अपने करेक्शंस करने हैं, तो वो फिर संस्कार बन जाता है. दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस. जी जी, थैंक यू सो मच उमेश जी. अगेन आई शैल टेल यू, आई have taken parenting expert certification from 2 big institutions. पर मैं आपको सच्चाई बताऊं, when we talk about certification, when we talk about all the things that we have learned just through information, it is very different from the experiential learning. जो एक्सपेरिमेंट हम दूसरों के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, दूसरे के इंफॉर्मेशन के थ्रू हम सीखते हैं, उससे कहीं ज्यादा अलग होता है what we are learning from our own experience. So I will share my own journey right now to the few people who are here. I have received 2 parenting certifications by 29th July 2022. 2022 में मेरे हाथ में 2 पेरेंटिंग सर्टिफिकेशन थे. आई वाज ऑलरेडी इनटू साइकोथेरेपी, लर्न सो मेनी मॉडलिटीज. आई वाज डीलिंग विथ students who were trying to attempt suicide. So I helped them, I counseled the parents and the students, took many parenting counseling sessions. But can I tell you what happened with me? Being a teacher, full-time teacher, being a counselor, I had a daughter. She was 15-year-old in 2022. And I lost her to suicide on 18th August. So, you see, it will come. For me also, that was a kind of great shock. I have so many accolades. I have received so much. I was at the peak of my career. I had so many things. But where did I go wrong? What happened? Why I couldn't save my own daughter? Yes, for sure. If you'll say that, then there is one thing, yeah, destiny mein yahi tha. And for sure, I really agree with that. And that's why I'm more into healing modalities and energy work. I am even able to communicate with her angels and all, so many other modalities I'm using. So I won't get into that. But yes, that point of time, I really felt कि ये सारे certifications ये सब का क्या मतलब है? Also, I was doing meditation every day, twice a day. I had started with 21-day manifestation challenge, meditation manifestation challenge at that time. And that was the 7th day. On 7th day, I lost her. So 5th day, she also meditated with me. And I was so happy because most of the time I was not getting time with her. I was not communicating with her. तो मैं लोगों को बता रही हूँ parenting session में 3 चीजें, 3 C के बारे में. The first C is communication, 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 communication. जिस कम्युनिकेशन के बारे में आज हमारा ये टॉपिक है. सेकेंड आफ्टर कम्युनिकेशन इज कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मतलब होता है जो आज मैं और साक्षी मिलके कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इन द सेम फील्ड एंड व्हेन वी कोलैबोरेट द इम्पैक्ट इज मोर, द रीच इज मोर, द इफेक्ट इज मोर. तो सोचो किसी भी फील्ड में, अब हम बच्चे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसके साथ किसी भी एक काम में हम लग जाएं तो क्या होगा, उसके साथ रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा, उसको समझने का मौका मिलेगा. उसके साथ पेंटिंग कर रहे हैं, उसके साथ गेम खेल रहे हैं, बट उसके साथ कर रहे हैं पूरी तरीके से 100% इन्वॉल्व होकर. एंड द थर्ड सी वाज कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंटिंग योर चाइल्ड और the person whom you are willing to work on the relationship, that you are doing so well, you are doing good, you are doing great. ये सब चीज थे and I was really doing that. Still something was missing, and you know what? Can you guess what was missing? The time she needed from me. Being a single parent, she needed more of my time, and I was devoted counseling others, and somehow I couldn't see the pain in her eyes. I couldn't see what she was going through herself, what pressure. She was in 10th standard, bullied in the school, going through her own turmoil, depression. I couldn't see it. I couldn't even imagine that my daughter will do that. And it was a great slap to me. So again, coming back to this, experience is much more than any kind of certification you can have. So that was the time I researched a lot on the internet. I found all the kind of, because I came to know about dark web, I came to know about many games.
So right now, my forte actually when I go to schools and all is talking about cyber security, talking about how to maintain the mental hygiene of your children. आप उसको ये नहीं बता सकते यार अच्छा है बुरा है, मैं कह रही हूँ अच्छा है तो ये अच्छा है, मैं कह रही हूँ बुरा है तो ये बुरा है, तुम वेबसाइट के इस वेबसाइट को मत ओपन करना, मैं कह रही हूँ. They won't listen to you. Again, they will do what you have been doing and what you have left them to do with. So they need that discretion to decide themselves. So again, coming back to communication part, तो कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं, व्हाट आई सेड, किसी भी रिलेशनशिप में कहीं भी, द बेसिक थिंग इज कम्युनिकेशन. हाउ वी आर इंटरैक्टिंग विद द पीपल अहेड. उसमें दो चीजें बताई, पहले नॉन वर्बल देन वर्बल. लेट्स गेट बैक टू वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल के बारे में अगर हम बात करें, दैट विल गो लॉन्ग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो बेटर कम बैक टू वर्बल कम्युनिकेशन राइट नाउ. अब वर्बल में क्या होता है ना, जैसे आई वुड रिक्वेस्ट समवन जो अभी तक नहीं आया, जो कैमरा ऑन कर सकते हैं, पूनम जी, नीलिमा जी, आप में से कोई कैमरा ऑन कर सकता है क्या? वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन. चलिए मोहित जी, मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? सो आप ना जस्ट इमेजिन दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन अ मूविंग ट्रेन. ट्रेन में 2-3 दिन की जर्नी है और आप मेरे साथ बैठे हो, पहली बार मुझे देख रहे हो. आप कैसे बात स्टार्ट करोगे? व्हाट विल यू से फर्स्ट? Like initial the greetings, नहीं नहीं, smile, आप fast. तुरंत अच्छा चलिए मिल लिए. नाउ यू आर सिटिंग, मतलब ग्रीटिंग व्रीटिंग सब हो चुका है. अभी आप Hmm. सामने हो ट्रेन में, चलती ट्रेन में, हमारा सफर 3 दिन का है और हम दोनों एक ही जगह उतरने वाले हैं. तो आप कैसे बात शुरू करोगे? नॉर्मल तरीके से आप बात शुरू करो और मैं जवाब देती जाऊंगी. Up say for example, from we are in Mumbai and you are traveling to Rajkot. I am basically हाँ. from Rajkot. हम्म. ठीक है. तो इनिशियल जो बातें हो चुकी है उसके बाद, तो आप पहली बार राजकोट आ रहे हो या आप राजकोट से ही हो? मैं राजकोट से हूँ. अच्छा. आप क्या करते हैं वहाँ पे? आपकी फैमिली सब वहीं पे है? देखिए मैं तो कुछ नहीं करती, मैं हाउसवाइफ. अच्छा, फैमिली. आप इतना क्यों इंटरेस्टेड हो रहे हैं मेरे फैमिली के लिए? अभी 3 दिन की जर्नी है, साथ में निकालना है इतना टाइम, तो मोहित, बात करेंगे. थैंक यू मोहित जी. सो हियर व्हेन वी आर इंटरैक्ट, वी सी द लैंग्वेज ऑफ द अदर पर्सन. जिस तरीके से मैं बात कर रही थी आपसे, तो उसमें साफ साफ जाहिर है कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है बात करने की. स्टिल यू कैन कम्युनिकेट. आपको पता है आप कैसे कर सकते हो? नाउ आई आस्क वैभवी जी, क्या आप वही लेडी बन सकते हो जो अभी मैं बनी थी? फॉर सम मोमेंट कैन यू एक्ट लाइक दैट, एंड आई विल बी टेलिंग हाउ वी कैन इंटरेक्ट विद दैट. आपको पूरे टाइम ना नहीं बोलना है, एंड आई हैव टू मेक यू टॉक टू मी. ओके, ठीक है. आप वैसे ही बोलिए. मैं आपसे कोई भी सवाल, जैसे आपने पूछा आप कहाँ से हो, हाँ मैं राजकोट से हूँ. आप क्या आपके क्या पूछा था, आप क्या करते हो, तो आपने मतलब ऐसे करके कह दिया कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ. फिर आपसे पूछा कि आपकी फैमिली में कौन है, आपने ऐसे जवाब दिया कि मेरे फैमिली में कौन है, उससे आपको क्या मिलेगा? एंड देन व्हाट मोहित जी सेड कि देखिए हमारा सफर तो लंबा है. अब इसी चीज को हम और कैसे कह सकते हैं? आई विल बी जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर. आपको रूडली जवाब देना, हर बात पे रूडली जवाब देना, ठीक है? सो जहां पे आपको लगे कि आप नहीं दे सकते, यू कैन स्माइल लाइक दिस हाउ यू आर स्माइलिंग राइट नाउ. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट वेयर मैं आपसे उसके बाद की बात कर रही हूँ. अच्छा, नो आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि हमारा सफर इतना लंबा है. सो आई जस्ट वांटेड टू सी कि हमें बात करने के लिए कुछ अभी चाहिए था एक. सो आई जस्ट स्टार्टेड विद आई एम सो सॉरी. ये आपके हाथ में कुछ लगा हुआ है, जस्ट चेक व्हाट इज दैट. ओह अच्छा कुछ तो अच्छा लगा होगा. अच्छा. डू यू वांट अ टिश्यू पेपर? आई हैव इट. नो नो, आई हैव. ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स. So after some moment, because you know that person doesn't want to be disturbed at this point of time, because you have to interact, you have to make that person to interact so that this journey will go smoothly. So now what I can do, what I have, किसी भी इंसान को क्या, किसी भी इंसान को अगर मैं आपसे पूछूं पूनम जी
right now you are listening. Why are you waiting here? What are you waiting for in this session? किसी को भी क्या चाहिए होता है? Because it is really important, Sakshi. I am really grateful to you. In the morning, I was really like, कौन कितने लोग आएंगे? Because people have their own job, their own thing. How will they come? How will they manage to come for this session? But yes, that's your incredible job. You have such good people who have really come up, turned up. So when we are sitting over here at this point of time, there is an intention, strong intention to have something. और अगर मैं मान लीजिए मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट करती, मैं फिर आपको दूसरी जगह पे लेके जा रही हूँ, पीछे लेके जा रही हूँ, एंड आई शुड हैव स्टार्टेड, अच्छा आज हम लोग कम्युनिकेशन की बात करने वाले हैं, एंड आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. आई विल टेल यू, आपको जब सामने वाले के पास जाना है तो स्माइल करना है, सीधा खड़े होना है, और जब आप जस्ट लुक, आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, नो डाउट दैट इज राइट. आपको किसी भी गूगल पे टाइप करो, कहीं भी टाइप करो, आज इतना सारा एआई है, आपको निकाल के सारा दे देगा. बट वी आर नॉट सिटिंग फॉर दिस. We are sitting to connect with the individual and how it can impact us. तो जब भी हम किसी सेशन के लिए जाते हैं, we first ask about what kind of audience it is. I am the ardent Shiva believer, but I know how to connect with any religion people, any religion person, किसी भी age group का person. Because when we are into healing and जब हम, क्योंकि तो मैं हर बात में शिवा का नाम लूंगी, बट सामने वाला अल्लाह का नाम ले रहा है, सामने वाला क्रिश्चियन है, जीसस क्राइस्ट, सामने वाला जैन है, आई नो दे वोंट बिलीव इन व्हाट आई एम सेइंग. सो यू टेल मी व्हाट गॉड यू बिलीव इन. सो यहाँ पे क्या आती है ना, अडेप्टेबिलिटी. सो कम्युनिकेशन का पहला रूल है, वर्बल कम्युनिकेशन का, अडेप्टेबिलिटी. वेर यू आर सिटिंग विथ विच एवर इंडिविजुअल, अगर आप बच्चे के पास बैठे हो, छोटा बच्चा है, उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो? लाजा बेटा मिला के चाहे तू. सो यू सी, यू आर नॉट स्टटरिंग, बट to be with that age, you try to be, so वो आपसे कनेक्ट करेगा. तो छोटी सी बात को हम भूल जाते हैं ना. So whichever kind of age group, whichever kind of person we are interacting with, we have to adapt accordingly. अभी जैसे मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी, अब वो तो डॉक्टर हैं, हर चीज का उनको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए, पेडिट्रिशियन है, so I will be interacting in that kind of language. वैभवी जी, आप क्या करते हैं? वर्किंग हूँ इन बैंक. किस चीज में आपका, मतलब क्या लाइन है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. लॉटरी? नहीं नहीं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्लायंस. आपसे जब बात करूंगी तो देखो, जिसका जो इंटरेस्ट होता है ना, हमें उस इंटरेस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए. जैसे मोहित जी आपने किया ना, आपने सीधा कहा कि आपको चाहिए कि बात करना है क्योंकि ये लंबा सफर है और हमें करना चाहिए. हमें उनको दिखाना है, हम दोनों के लिए लंबा सफर है, और थोड़ा बात करके हल्का, उनका सामने वाले का इंटरेस्ट दिखाना बहुत जरूरी होता है. ये चीज ना, पता है, रिलेशनशिप भी एक तरीके का बिजनेस है. एक गाना बहुत फेमस हुआ था, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है, बट दैट्स द ट्रुथ. It's a kind of business, because business is also love. I have become a business lady also, business woman also. I know कि बिजनेस में भी तो यही चीज है जो रिश्तेदारी में यूज होता है. आपका बिजनेस तभी लंबा चलने वाला है जब आप उस रिलेशनशिप में वो अडेप्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे हुए. Isn't it? I guess Umesh ji मैडम, wants something. Yeah. यस, मैं एक्चुअली क्या है कि एक किताब पढ़ रहा था. एक्चुअली कोइंसिडेंस है कि आई ऑल्सो लाइक द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन वेरी मच. तो उसमें ये दिया हुआ था कि हमारे जो सॉर्ट ऑफ ए ब्रेन है या कान है, वो बहुत ज्यादा एसोसिएट होते हैं हमारे नाम से. जी. तो कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन किसी से भी स्टार्ट करने के लिए, एक, बहुत. मेरा नाम ये है, जी. आपका क्या नाम है, मतलब जो है कि, क्योंकि उस किताब में ये लिखा था कि लोगों को अपने नाम से बहुत ज्यादा प्यार रहता है. पीपल बहुत. लाइक द नेम, राइट. जैसे मैं अभी आपसे जैसे है कि अ, आपके नाम में मैं जो कह रहा हूं कि देखिए, आपके नाम में ही शक्ति है. जी 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 और इस समय नवरात्रि चल रही है, जी जी तो आप तो शक्ति की मूर्त हैं. जी. दो चार ऐसे सेंटेंस इनोवेटिव हो, यहाँ पर क्रिएटिविटी आती है. बहुत सही. आप जब तक किसी न किसी व्यक्ति से कनेक्शन करने के लिए आपके अंदर कोई ना कोई एप्रिशिएटिव कंटेंट नहीं आएगा,
जी तो सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं होगा। ये मैं जस्ट, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो और वो एप्रिशिएटिव कंटेंट में शब्द तो बोल रहे हैं, साथ में स्माइल भी है। तो जी जी। सपोज आई से, आप ही से मैं बात करूं हम्म कि आज तो कितना ही अच्छा दिन है, अनुपम दिन है आज। हम्म आज अष्टमी है हम्म। और आप जो है शक्ति की मूरत हैं। तो आप खुद भी, आप में शक्ति है, जी आप जी हमको भी शक्ति प्रदान करने आए हैं। आपका बहुत ही स्वागत है। तो कान को कोई भी चीज जो है, हियरिंग में जो मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में, कान को सुकून मिलना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। दैट इज द एसेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। और इसका रिवर्स है, मेरे मुंह से ऐसा एक भी सेंटेंस नहीं निकलना चाहिए जिससे कि किसी को हर्ट हो। आहत हो जाए। मतलब जो है कि these are precautions in verbal communications. This is what this is my experience. This is what So very rightly you have stated. This was the point which is really to be highlighted. जैसे मैं भी आप लोगों से बात कर रही हूँ, जब यहाँ तो वर्बल, ये आप लोग वर्चुअल बैकग्राउंड में हैं, स्टिल whenever we are calling with the name, that name is highlighted and you feel obliged. तो नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है सही में। जब हम किसी से बात करते हैं तो बेसिक, जब नाम को बार बार लेते रहना, उमेश जी ने बहुत अच्छे से बताया है, दैट ऑल्सो शोज योर प्रेजेंस, क्योंकि आप उनको उनकी उपयोगिता बता रहे हो। जैसे मैंने बताया, उनकी जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। वैसे ही जब हम उनका नाम ले रहे हैं, नाम उनका सबसे ज्यादा प्रिय चीज होता है, किसी अपने का अपना नाम। दैट इसको मैं इस तरीके से बताऊंगी कि हर एक इंसान अपनी लाइफ का, अपने पूरे एंटायर लाइफ का सेंटर होता है, केंद्र बिंदु होता है। तो जैसे हम लोग, ऐसे मैं क्लास में बताती हूँ, वही चीज आपको बता रही हूँ। मान लो आप बाहुबली देख रहे हो, तो जब आप बाहुबली देख रहे होते हो ना, तो उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, यू विजुअलाइज योर सेल्फ एज द सेंट्रल कैरेक्टर। मतलब आपको बाहुबली में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे। और जो मान लो लड़की है, वो उसी हिसाब से, इट्स नॉट अबाउट फीमेल और मेल, बट आप एक किसी सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक में खुद को देखते हो एंड यू कीप ऑन ऑब्जर्विंग कि अच्छा, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आई विल एक्ट डिफरेंटली इन दिस सिचुएशन। तो हम जब अपने आप के केंद्र बिंदु हैं, हर चीज हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। तो जैसे आपने बताया अनुपम है, तो अनुपम के लिए अनुपम मेन है। उमेश जी के लिए उमेश जी से दुनिया शुरू हो रही है और फिर उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूम रही है। मोहित जी के लिए मोहित जी, साक्षी। सो एवरीवन इज द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स। अब उस सेंटर के बाद फिर नेक्स्ट चीजें शुरू होती हैं, जैसे आपके क्लोज रिलेटिव्स हुए, फ्रेंड्स हुए, एंड देन इट गोज फर्दर। अब इसमें क्या हो इसी का जाता है? एग्जाम्पल, सॉरी, इसी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरे प्रोफेसर कई हैं, प्रोफेसर्स, पर जो जो प्रोफेसर मेरे को उमेश करके बुलाते, जी जी। दे हैव गॉट चॉइस, दे कैन कॉल मी विद एनी नेम। हम्म। बट जिस जिस प्रोफेसर ने मुझे उमेश करके बुलाया, आज वो प्रोफेसर के प्रति मेरा आज भी ज्यादा आदर है, सत्कार है, प्रेम है। जी जी। क्योंकि मुझे उस शब्द में उमेश हम्म। लगता है कि वो मेरे से प्यार कर रहा है, प्रेम कर रहा है। तो बहुत सही। प्रेम फिर रेसिप्रोकेट होगा। मतलब यदि वो मेरे से प्रेम कर रहे हैं, तो मैं भी उनसे अच्छे तरीके से बात करूंगा। जी तो जी। कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे जो है कि स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्वर्सेशन में मधुरता जो है कि बहुत ही सॉर्ट ऑफ ए, कटुता नहीं होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज माय एक्सपीरियंस। उमेश ने मेरा काम आसान कर दिया है। उन्होंने दो पॉइंट्स एक साथ यहाँ बता दिए हैं जो मैं बताने वाली थी। पहला एक्सेप्टेंस मैंने बताया, दूसरा जो है सॉफ्टनेस होता है। अपनी आवाज में सॉफ्टनेस होनी चाहिए। जब हम समझे, जैसे अभी मैं आपसे आप लोगों को मैंने बताया अभी कम्युनिकेशन, आई रेज्ड माय वॉइस। द मोमेंट आई रेज माय वॉइस, वो डिस्कनेक्ट हैपन होता है। द मोमेंट आई सॉफ्ट, you see, we have discussed about so many things. Umesh ji has explained so well about softness and gentleness. So now we'll be seeing that how softness can bring anyone closer to you. तो ये तो सिंपल एस्पेक्ट हुए कम्युनिकेशन के, वेयर वी लर्न कि कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स ही मायने नहीं रखते हैं। हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द वर्ड, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आपको कुछ सीक्रेट बोलना हो, यू कम नियर बाय, एंड जब आपको लगे कि अभी आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, देन सडनली यू गो बैक कि अब तो
ये मेरी बात सुन नहीं रहा है, so let it be, let them stay away. So these are the kind of things which we really need as a kind of टेक्निक्स, सिंपल टेक्निक्स हैं जो हम सबको मालूम होते हैं, बट वी कीप ऑन इग्नोरिंग. तो सामने वाले को समझना बहुत जरूरी होता है कि उसको क्या चाहिए, उसकी नीड को जानना. बिना सामने वाले की नीड को जाने अगर हम बात करें, दिस इज जस्ट लाइक बैबलिंग. जैसे मैं आपको बैबलिंग करके दिखाती हूँ. साक्षी, कैन वी डू सम एक्सपेरिमेंट हियर फॉर बैबलिंग? तो आप मेरे से कुछ भी सवाल पूछिए और फिर मैं आपसे पूछूंगी. इस हिसाब से देखते हैं कि कैसे कन्वर्सेशन कहाँ जा रहा है. जी. हाय अनुपम, कैसे हैं? क्या हम कल मिल सकते हैं क्या? कॉफी पे कुछ काम की बातें डिस्कस करनी थी. अरे साक्षी, कल मैं बहुत थक गई, पता है. आई वाज सो टायर्ड यस्टरडे. आई कुडंट स्लीप, इतना, मतलब इतना सारा सेशन होता रहता है, समझ ही नहीं आता है क्या करूं, कैसे हो. और पता है अभी बहुत सारी चीजें हैं, क्या बताऊं तुमको. और पता है मुझे ना ये मिला यहाँ पे, और मैं बहुत बहुत खुश थी उसके लिए. तुम बीच में रोक ही नहीं रही हो. वी हैव टू मेक इट बैक. कभी कभी आई एम वेटिंग कि अभी कहीं पे रुकोगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं ना कि अरे नहीं है कल की बात करनी है. जिसमें हम दोनों बोलना चाह रहे हैं. द यस. मोमेंट आई स्टार्टेड टेलिंग, आप भी अगर बोलने लगो, हाँ पता है मैं भी नहीं. सवाल क्या था? कल मिल सकते हैं या नहीं? तक नहीं. सिंपल सा सवाल है. और मैं क्या कह रही हूँ, मैं कल थक गई, ये हो गया, वो हो गया. अरे अनुपम जी, छोड़ो ना, कल मिलते हैं ना, पहले वो बताओ. हाँ, दिस एक्चुअली काइंड ऑफ कन्वर्सेशन वी आर ब्रिंगिंग आउट. अभी मैं वहां तक गई, अब वो सामने वाला भी वैसे, तो दिस इज कॉल्ड बैबलिंग, विच इज नॉट टेकिंग अस एनीवेयर. तो अब ये चीजों में इंट्रिकेसीज लाने के लिए, हाउ टू इंटरैक्ट, किस तरीके से आपको, अगर एनएलपी की बात करूं, तो सबसे पहले एनएलपी में होता है, अगर मैं बिठा आपको दिखाऊं, सो यू आर सिटिंग लाइक दिस, मतलब एक लेग के ऊपर दूसरा लेग डाल करके आप ऐसे. सो यू हैव टू मिमिक दैट टू एट सम एक्सटेंट. अगर आप कनेक्शन बनाना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेकिंग अ गुड रैपो, गुड कनेक्शन, जहाँ पे आप उनके मूवमेंट को थोड़ा बहुत कॉपी कर पा रहे हो, एंड देन यू डू दिस. ओके. तो जैसे आप यहाँ बैठे हो, आंखें आपकी किसी चीज को एक बार देख रही है, सो यू ऑल्सो लुक एट दैट, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग दैट पर्सन. तो ये भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है. एनएलपी का एक पार्ट है जिसमें हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. तो आप रियली किसी से बहुत अच्छा कनेक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड गेट इनटू दैट. और अभी उमेश सर ने वो दूसरा पॉइंट भी बताया कि डोंट से एनी सॉर्ट ऑफ थिंग दैट माइट हर्ट, जो उनको आहत करे, जो उनको सुनने में पसंद ना आए. कहते हैं कि सच्चाई को भी इस तरीके से बोला करो कि सच जो है ना, करवा ना लगे. मैं आपको अपनी एक कहानी बताती हूँ. जब मैं 9th स्टैंडर्ड में, और मेरा बर्थडे था, मेरे पिताजी उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे. उन्होंने क्या किया कि हमारे 3-4 रेंटर थे, उन्होंने रेंटर्स को इनवाइट किया था. और मैं क्योंकि हॉस्टल में ही रही थी पूरे टाइम, 7 से 9 तक, उस टाइम में छुट्टी में आई हुई थी. तो जो लोग आए थे सब कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए थे. गिफ्ट देके, तो जो भी 9th स्टैंडर्ड में, आप समझ सकते हो कितनी खुशी होती है गिफ्ट देके. पर एक रेंटर थी, उन्होंने गिफ्ट की जगह क्या किया, लिफाफे में पैसे डाल के मुझे दे रही थी. और उस समय का मेरा दिमाग, मैंने कहा कि भाभी आप होटल का बिल दे रहे हो क्या? एंड दैट हर्ट दैट लेडी सो मच. शी लिटरली लाइक वेंट आउट फ्रॉम आवर हाउस एंड शी नेवर केम बैक. मतलब वो हमारे यहाँ बहुत कम आने लगी उसके बाद से, और मेरे से बात भी नहीं करने लगी. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ वियर्ड सिचुएशन फॉर मी. मैंने यही सोचा, मैंने गलत क्या बोला कि आप यहाँ हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आए, उसके लिए पैसे दे रहे हो. And then my father explained me something which I always remember, जो कि आप सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, सत्यम अप्रियम न वदेत. तो yes, for sure it was the truth, no doubt. जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो इसी तरीके से कि अच्छा कोई गिफ्ट नहीं लाए तो कम से कम इतना खाना खाया, उसका पेमेंट कर देते हैं. This is the simple logic. But stating in that way was really rude, harsh, and also derogatory remark. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. वो तो उस उम्र में मुझे नहीं समझ में आया, और मैंने कहा. फिर ऐसी ही रिलेशनशिप में भी कई बार होता है जहां हम कुछ ऐसी बात कह देते हैं जहां हमें लगता है कि हमने तो सच कहा, हमने तो कुछ गलत नहीं कहा, बट वी डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन. तो इस चीज के लिए एक मूल मंत्र है विच आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट हियर. जब भी आप किसी को कुछ भी कहने जा रहे हो ना, फर्स्ट थिंक अबाउट इट. इफ समवन एल्स इज टेलिंग यू दिस, हाउ वुड यू रिएक्ट, how would you respond?
what all you will feel in your body. For example, मैं आपको कहूँ, अरे तुम तो बहुत मोटी हो, तुमको ना बहुत सारा मेहनत करना चाहिए, you need to exercise a lot. Now look at this language. You are right, no doubt. Yes, वजन बढ़ गया, obesity है, you have to work a lot. But is this language going to help that person or your relationship? It will ruin everything. अब इसी को हम अच्छे से कैसे कह सकते हैं? चलिए हम किसी से पूछते हैं, उमेश जी आप कैसे बोलोगे? मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, आप डॉक्टर हो, so how will you help me? Like how will you tell me actually कि मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि कभी भी किसी पे इस प्रकार से सबके सबके सबसे पहले स्ट्रेंथ बताना चाहिए। एकदम से डायरेक्टली यदि आप किसी को बताएंगे तो ये, और खासकर यदि टीनेजर गर्ल को बताएंगे तो वो तो एक सीधा का सीधा ऑफेंस कहला देगा। मेरे हिसाब से तो वो ऑफेंसिव हो जाएगा। आपको सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ बतानी है। मींस देखो, है यू आर सच ए नाइस गर्ल और यू आर सच ए नाइस इंडिविजुअल, है ना। तुम कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स हैं या जो भी है। और उसके बाद में आप धीरे 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 उसको उस गोल की तरफ ले जाएंगे। और गोल भी रहता है कि भाई तुम यदि जस्ट 2 किलो, अपना 2 किलो भी यदि वेट को कम कर लोगे, है ना, तो मतलब जो कुछ भी है तुम्हें खुद को ही फायदा होगा। मतलब तुम्हारे को खुद को ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी और लोग तुमको अप्रिशिएट करेंगे। तुमको अच्छी अच्छी फिर नई ड्रेसेस मिलेंगी। मीनिंग देयर बाय कभी भी बड़ा गोल नहीं देना चाहिए। एप्रिसिएशन इज ए मस्ट, क्योंकि वेट मैनेजमेंट में मैं पूरा स्टडी किया हूँ। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड। वेरी ट्रू। जब तक आपका माइंड कन्विंस्ड नहीं है उससे, ना तो वेट मैनेजमेंट होगा, ना एक्सरसाइज होगा, ना फूड मैनेजमेंट होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो क्योंकि मच। आपके माइंड में वो विल पावर आना चाहिए और जी वो छोटे गोल से ही आता है। दिस इज जी, व्हाट आई एम ट्राइंग। बहुत सही, थैंक यू सो मच उमेश जी। सो साक्षी, आई विल बी डूइंग द सेम थिंग विथ यू। उमेश जी ने ऑलरेडी बताया कि व्हेनेवर वी आर टेलिंग, दिस इज कॉल्ड सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में क्या होता है, वेर यू अप्रिसिएट फर्स्ट, गेट द अप्रिसिएशन का मतलब होता है गेट द attention, get the love and affection of that person, and then state your point. वो state point को state करने का भी तरीका अलग होता है, that will be giving a demo right now. And the last part is again ending it with a positive note. So इसको हम sandwich model कहते हैं, जो कि communication में बहुत helpful होता है. This you can use for any of your relationship. आपका बच्चा है, आपके spouse हैं, आपके profession में you can use. आपको कुछ भी अगर गलत लग रहा है and you are really willing to, मतलब जनरली हम सीधे क्रिटिसाइज करते हैं, ये ऐसा क्यों है, तो मेक अ हैबिट ऑफ टेलिंग इट इन अ सैंडविच मॉडल। तो अभी मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ साक्षी के साथ, हाउ आई विल बी टेलिंग हर टू रिड्यूस हर वेट। ठीक है? हाय साक्षी, हाउ आर यू डूइंग? I'm good, Anupam. How are you? Oh, I'm also well. So I really love your whole energy, you know, how you conduct the sessions and do all the things. You manage so many people all together. I really respect you for that, Sakshi. Thank you so much. Really appreciate. So are you taking care of your health when you are working so much for all the other people? Don't you think that you are able to give time for your personal health or not? No, yeah, it's really going for a toss what to say. I really try to, remove some time out, but it's just not happening. Oh, sure. So that might be really. So are you getting good sleep? Kind of. I can say yes, no, but yeah. Acha. So even your sleep is impacted. I can see. What about your What diet? should I do? Diet, so don't ask only because there's no timetable fixed about, okay, I can have lunch at this time. Digestion. Digestion, yeah, digestion is good. Wow, brilliant. So just simple walk every day helps. It has helped me a lot. I have been dealing a lot with this kind of digestion issues and also standing for long hours. So I couldn't get good sleep at night. But for about a month I started walking, and now you see I have not just reduced the weight, forget about the weight, but I'm feeling so energetic. So I'm going every day for a walk. Are you ready to come with me tomorrow?
Please call me. I'll come. Just let me know half an hour prior and I'll surely try to make it at least even if I can join you for 15-20 minutes, I would love to. That's the only lack of motivation I feel, there's no company to walk. So this is like sorted. Definitely. Thank you so much, Sakshi. You're such a sweet girl. So you saw how easy it is to convince someone, or if I had used the same way which I started earlier, कि अरे तू इतनी मोटी हो गई है, तुमको 2 kg वजन कम करना चाहिए अभी, नहीं तो कैसे करेगी? And then now मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं कैसे करूंगी? It will end over there. I'm not getting time. I'm so busy right now. So there is a way of talking to anyone. Even अब मैं एक दूसरा एग्जांपल, क्योंकि हमारी बातें हो रही थी एकेडमिक्स और जनरल दोनों की, तो एकेडमिक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि आप सबके पास कहीं ना कहीं बच्चों से आप अगर डील कर रहे हो, और बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम आता है कॉन्सेंट्रेशन इशू का, डिस्ट्रैक्शन का, सोशल मीडिया में अटैचमेंट का. सो हाउ टू कन्विंस देम. अभी ये तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उसके लिए तो हम 21 दिन का ये लेते हैं. बट हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू विथ कम्युनिकेशन व्हाट यू कैन डू. जस्ट टेलिंग देम, अरे अभी पढ़ने का टाइम है, बंद करो, अभी तुम मोबाइल मत देखो. दैट वोंट हेल्प यू इन एनी वे. So how you can get into? Okay, how was your result? Oh, very good. So you got 8 out of 10. That's a good mark. What is the mistake that you have made? Can I see? Can I check it? And after checking the mistake, you find out that they are all the silly mistake. मतलब वो जगह पे बच्चा अच्छा वहां भी पूरा मार्क्स ला सकता था. So now you'll be telling, you knew this thing, weren't you? We have done this thing long back, and you just solved them very correctly earlier. Yes, Mama, I really missed it out. Okay, so what do you think makes you like get in this way, making such sort of silly mistakes? Mama, I'm so sorry. I couldn't give that time. All the excuses will be there. I didn't give that much time. I'll pay more attention. I will practice more. So what is stopping you from practicing more? And then you can again say with the compliment, I'm very proud of you that you realize your mistake and you're ready to work on it. So let's make a plan and work on this. Now look, you are not making the, you are giving the child to get the plan in front of you. Just for 5 minutes I'll be taking. Yes, I'm so sorry. We had to end by 7:30, but I have to make just simple mindfulness practice for you, which will help you to get into any kind of conversation when you are going into. तो मैं एक difficult conversation के लिए भी बात कर रही थी. कभी कभी ऐसा होता है जहाँ मैं आपको situations दे देती हूँ. मान लीजिए आपसे कोई गलती, छोटी बड़ी कोई सी भी गलती, and you are going to confront it. So you are really scared from within, nervous, how I am going to share it. उस समय का वो नर्वसनेस है. ठीक है. दूसरा नर्वसनेस, I should have asked you, but हमारे पास टाइम नहीं है. That's why I'm myself sharing all these difficult situation where you get into conversation. Second part is when you are going into a huge public, जिसमें कहते हैं butterflies आपके पेट में आने लगते हैं, and that's again natural. अब आप अमिताभ बच्चन से पूछो, जो भी बड़े बड़े एंकर है, सबसे पूछो, they all will say once they get into the stage, they have the butterflies in the stomach. Okay, and that's very, very natural. How we are going ahead with that, after some time it really becomes like you get into the public, you get connected with them, and that goes away. But जब वो butterfly ऐसा लगे that it is really fierce and you are not able to speak, sometimes people get frozen. That is one difficult situation. Another difficult situation is when you have to share something which is a kind of bad news that you have to share with someone, something that the person will be not ready to listen in any way. So how to present yourself in those situations? For that, I'll be doing a simple mindfulness practice, which will help you to get into that situation very well. So उसमें एक मैं शिकन ताजा यूज करूंगी. शिकन ताजा is basically staring at one point for long period of time, especially in front of your wall. और उसको देखते हुए आपको बस ये मानना है कि दुनिया में अगर कुछ भी एग्जिस्ट करता है, ये वॉल है. यानी कि हियर एंड नाउ का प्रिंसिपल, जो आप विपस्सना भी कहते हो, जो है यही है इसी वक्त पे. सो ओनली थिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज द वॉल. यू कैन ओनली सी दैट एंड कीप ऑन स्टेयरिंग एट दैट वॉल. द थॉट्स विल कीप ऑन कमिंग. वो थॉट्स, ये थॉट, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती रहेंगी. बट you can ask your children, people whom you really want to work with, जहाँ पे वो उनका mental stabilize हो. This is the best weapon to fight with any kind of distraction. ठीक है. तो आप जैसे वहां हो,
just keep on telling your mind, your eyes all the time कि जो कुछ भी है यही है, इसी वक्त में है. And as you are looking at that, your eyes will feel tired after some time and you will tend to close your eyes. Okay, तो ये आप अभी हमारे पास वक्त नहीं है. You can do it later on, this practice where you can just stare in front of the wall. और इसको आप 5 मिनट करो. ठीक है, just 5 minutes. Keep on staring at the wall, keep on staring, keep on telling your mind, this is there, here and now. What color of the wall, what texture of the wall, if you will touch that wall, how it will feel, what all radiation you are getting from the wall, what sound it will make when you go tap the wall. Even you can think about your taste bud. बचपन में तो हम लोगों ने टेस्ट किया होगा. You can just recall that taste. If I'll taste that wall, how it will taste. So think about all your senses when you are looking at the wall, but nothing else which is coming up, you have to pay attention to. Let them come and go. You just pay attention to that wall. So this is the first practice you can do. And then the second one is breathing one. Okay. So box breathing is the best weapon to deal with any situation. जो कि हम माइंडफुलनेस में सबसे पहले मतलब बेसिकली जब हम किसी के साथ कनेक्ट भी करते हैं तो बॉक्स ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट करते हैं. बॉक्स ब्रीदिंग का मतलब होता है डीप इनहेलेशन इन 4 काउंट, 1 2 3 4 इनहेलेशन, pause for 4 breathe, like 4 count, 1 2 3 4, wait, let the breath be there inside your stomach, and then as you exhale again 1 2 3 4 and wait for 4 count. So this is called box breathing. This will help you to deal with any kind of nervousness, any kind of agitation, any kind of situation you are going to be in front of. So this is it from my side. Thank you so much for being great listener. Thank you Sakshi. Thank you Vaibhavi, Sanjay ji, Kalyanvi, Veena, Nilima. Thank you so much. Thank you so much, Anupam. It was a great session, a great start to the morning, a kickstart booster energy within ourselves. So, and before we would, wind up, I would also like to say thank you to Kala ma'am. She is my professor and we are connecting nearly after 20 years. She is one of the base roots of who I am today. So I just wanted to express my heartfelt gratitude to her. Since we are on the communication mode today, so I said, why not communicate this also? So thank you, Kala ma'am, for always being there. I don't know how, but yes, you've been there, and college time, your support has really made me who I am today. So, and yes, if anyone has questions, Anupam ji is on the group. We can always have a discussion, an extended conversation. Any doubts, any queries can be answered, can be resolved. Yeah. Okay. Thank Actually, you. can I take a small question? Yes. I think that will help everyone. So that is Yes, the reason. please. So ideally, this is a communication session. So I want to understand, like there are many situations which are not acceptable to us. So the situation is not per what we want or what we desire that the situation should be like this, especially into a corporate world. So how does one react to it, or how does how to communicate when the situation is not up to what expectations we have set for that work to be done? Thank you so much, Mohit ji, for bringing such a great question, which really might help everyone. And even I have worked in corporate. Talent Career Institute is a corporate only, and I have seen the situation very closely. So I'll tell you one thing. I learned NLP to deal with my colleagues, to deal with my people who are always, and it is everywhere, not at any particular place, everywhere. Because the criteria of selection is based on who is pampering you more, who is buttering you more. That is the rule of the corporate, which is available everywhere. So this is our frame of reference. ठीक है, अभी हम लोगों ने बताया ना, frame of reference का मतलब होता है ये situation हमारे लिए. Do we have any control on it? जिसको हम बोलते हैं locus of control, LOC. Do we have any control on this frame of reference? हमारे seniors, हमारे colleagues कैसी बातें कर रहे हैं, जिस तरीके के situation में हम हैं, can we change anything? Okay, so what is in our control, locus of control? अभी मैंने एक चीज बताया था जब उमेश जी बात कर रहे थे, उमेश जी, कि you are the center of your life. तो सबसे पहले कंट्रोल भी हम किसको कर सकते हैं? सबसे ज्यादा कंट्रोल भी किसके ऊपर है? हमारे अपने ऊपर. So
It's a very good question. How to react, how to respond actually. Reaction तो instant होता है, कोई भी react करता है. आपने जोर से बोला हाँ मैं भी resign देता हूँ. That's the real मतलब quick answer. But that's not the genuine or the required response. So response क्या होगा? What I am doing, यहाँ पे मैं कर्मा के philosophy को follow करती हूँ. So frame of reference में I can't control anyone. I can't control the situation. I can control only myself. So what I'll be doing, I will be using positive affirmation for myself. I'll be using sandwich model for them all the time. Okay. So आपको अपनी point जब भी कहनी है उनके सामने रखनी है. Make a habit of using the sandwich model. Never tell them कि सर आपने ऐसा कैसे कर दिया, ये मुझे नहीं दिया, ये उसको कैसे दे दिया, सर ये वाला जो था ये सारा काम तो मैंने किया पर इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला. Rather than telling that, you should come, sir, I really appreciate the help and efforts you have been putting in taking all of us for this ride. But I am a bit disappointed for this reason. Not you have done anything. I am a bit disappointed because I really worked a lot for this. Can you please tell me like what I need to work on? So then he will come up. अगर आपने सही में ऐसा effort डाला, ऐसा किया है, he will come to know that yes, he has put and इतना मेरे ऊपर appreciation है, because appreciation really works. सिर्फ नाम ही नहीं, compliment जिसकी हम बात करते हैं, compliment works in every situation. अभी उमेश जी ने बहुत सुंदर example दिया नाम से. जैसे मैं आपको बताऊं, मोहित जी आप कितने कमाल के listener हो, पता है शुरू से के अंत तक आप बने रहे, and the way you have been listening was really incredible. Look at the genuine smile. This is the truth. I didn't say anything wrong. Your energy is really contagious. So what energy you are creating that keeps on, आपको अभी असर नहीं नजर आएगा, but after some time it will come. I will tell you my own story. I left Allen Career Institute on 15th August because I was not able to give full time to this work which I enjoy doing. और भी बहुत सारे reasons थे. तो जब तक आप रहते हो तो कलीग के सामने उनके अपने डिस्प्यूट्स, उनके अपने पॉइंट्स, उनके अपने तरीके, एंड फॉर देम आई वाज जस्ट एन इंग्लिश टीचर. और इंग्लिश टीचर का आप सोच लो, जहाँ आईआईटी पढ़ाने वाला बंदा है, नीट पढ़ाने वाला बंदा है, वहां पे उनको इंग्लिश का कोई महत्व भी नजर नहीं आता. उनके लिए तो भाई हमें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ही क्या है, हमें तो डॉक्टर बनना है, हमें तो इंजीनियर बनना है. सो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट दे हैव गॉट. ठीक है. So once I resigned, and you won't believe I got numerous awards. अभी तक मुझे 5-6 award मिल चुके हैं, where people really call me to give me award for the work I have been doing. I go to NGOs, I go to schools and conduct sessions. अभी ये mental health awareness month है, I go over there, and now these people call me back. अरे मैम बहुत अच्छा कर रहे हो. I'm so happy that you left the job and you're doing what you love doing. So you see, this will come. You keep on doing your work. यही हमारे कंट्रोल में, हमारे लोकस ऑफ कंट्रोल में सिर्फ हमारा अपना कर्म है. हम उनके कर्म को डिसाइड कर ही नहीं सकते. हमारा कर्म उनको इम्पैक्ट जरूर कर सकता है. सो हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारे एक्शन कर रहे हैं, दैट विल इम्पैक्ट देम, एंड सूनर और लेटर दैट विल कम बैक, क्योंकि फल तो हमको अपने ही कर्म का मिलने वाला है. Very rightly said. Thank you. Thank you so much. Okay, with this, we come to an end of today's session, and it's never an end, it's a new beginning. So thank you so much, Anuppam. Thank you everyone for being a part of PosiFest. See you all tomorrow, 6:30 a.m. Thank you. Thank you everyone for being over. Thank you, everyone.